हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फ्रिज साफ़ करने जा रहे थे, तो सोचे आप लोग को वीडियो दिखा दूँ, कुछ टिप्स मिल जाएगा आप लोग को, मैं बताऊंगी। तो हम यहाँ फ्रिज साफ़ करने के लिए गर्म पानी कर लिए थे, उसमें एक नींबू निचोड़ लिए थे। और नींबू वाला पानी से साफ़ करने से फ्रिज अच्छा रहता है, मतलब स्मेल वगैरह नहीं करता है, स्मेल सब ख़त्म हो जाता है, एकदम फ्रेश जैसा खुशबू आता है। तो हमको पसंद है, इसलिए इसमें एक नींबू निचोड़। तो ये फ्रिज का सारे स्टैंड निकाल लिए थे, उसको भी अच्छे से, जितना शीशा होता है कांच का होता है, तो उसको भी अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। फिर इसको साफ़ पानी से अच्छे से धोएंगे। फिर तो ये मैं सारे स्टैंड किचन में ले आई और पानी से अच्छे से धो देंगे, सारे क्लीन से हो जाएंगे। कपड़े से अच्छे से साफ़ नहीं होते थे वो, तो मैं जो भी दाग वगैरह था उसको मैं कपड़े से अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लिए थे, और इसको अच्छे से पानी सब साफ़ कर लेंगे।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छे वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, और हाँ, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जाके सब्सक्राइब कर ले। तो ये मैंने सारे स्टैंड धो लिए हैं, सबको सूखे कपड़े से पोंछ के फ्रिज में सेट कर देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे अच्छे टिप्स के साथ। तो ये मैंने कवर कर दिया पर अच्छे से, अब सबको फ्रिज में सारे स्टैंड को सेट कर दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप अपना ख्याल रखना।